Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Prakash Patel from Automobile Engineering Department. Today's our topic is phase diagram part 3. This topic comes in the third mechanical and automobile engineering department in a material science and metallurgy subjects. Some of the important content of our topics are phase diagram, types of phase diagram, unary phase diagram, binary phase diagram, types of binary phase diagram, complete solution type binary phase diagram, eutectic phase diagram, paratectic phase diagram, and lastly application of phase diagram. Now discuss one by one. First of phase. हम फेज किसको बोलते हैं? फेज इज ए होमोजेनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द मटेरियल विथ ए गिवन केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। मीन्स फेज वो होता है जो होमोजेनियसली फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट होता है मटेरियल का। मीन्स एज ए एग्जांपल इज ए सपोज मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ए लिक्विड और इन ए फेज ऑफ solid or on a gases is known as a phase. Okay, now phase diagram. Phase diagram is a types of chart used to show condition at which thermodynamically distinct phase can occur at equilibrium at different temperature, pressure and composition. Means phase diagram क्या होता है? हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। इस चार्ट में क्या होता है, जो अलग अलग कंडीशन है मटेरियल की एज ए टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, वो अलग अलग कंडीशन पे उसका फेज क्या होता है वो हमें फेज डायग्राम में दिखता है। मतलब फेज डायग्राम हमें क्या इंडिकेट करता है? मटेरियल का फेज एट ए वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन कंडीशन, इसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। ओके, और अदर फीचर्स क्या होती है फेज डायग्राम की? देखिए, द बेस्ट मेथड टू record the data related to phase changes in many alloy system is in the form of phase diagram, also known as इक्विलिब्रियम डायग्राम और कंस्टिट्यूशनल डायग्राम। उसको हम इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं और कंस्टिट्यूशनल डायग्राम भी बोलते हैं। In order to specify completely the state of system in equilibrium, it is necessary to specify 3 independent variables। यहाँ 3 independent variables कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, दूसरा कंपोजिशन और तीसरा प्रेशर। ओके, इन 3 variables which depend upon the phase of the system. Okay, these variables which are externally controllable are temperature, pressure and composition. Okay. Phase diagram is a graphical representation of the phases present in a system under different condition of pressure, temperature and composition. With pressure assumed to be constant at a atmospheric pressure, the equilibrium diagram indicates the structural changes due to the variation of temperature and composition. Means हम क्या करते हैं, हमारी सब प्रोसेस है जो फेज डायग्राम है वो सब कौन से प्रेशर में होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है जो है। तो हम जो वेरिएबल है प्रेशर उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं क्योंकि सब प्रोसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है। तो हमारे पास कितने वेरिएबल अभी चेंजेबल हो रहे? ओनली 2। कौन कौन से? टेम्परेचर और कंपोजिशन। मीन्स एवरी प्रोसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी टेक ओनली 2 वेरिएबल्स। ओके, इन ए फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम। Equilibrium condition may be approached by extremely slow heating and cooling so that the phase changes in to occur sufficient time is allowed। Equilibrium condition में क्या होता है? Equilibrium condition में क्या होता है कि हम सब प्रोसेस एक्चुअली Equilibrium condition नहीं होती, लेकिन हमको इसको स्लो हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस कंसिडर करते हैं तो हम Equilibrium condition ले लेते हैं। जैसे क्वासिस्टेटिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक, सेम एज ए Equilibrium condition। ओके, now main topics is types of phase diagram. Here we discuss 3 types of phase diagram: unary phase diagram, binary phase diagram and third ternary phase diagram. Here binary phase diagram also is classified into 3. Okay, now discuss after later. First of unary phase diagram. Unary phase diagram हमने लास्ट वीडियो मतलब फेज एंड फेज डायग्राम पार्ट 1 में हमने सिखाया था। इसमें था वाटर और प्योर आयन का। ओके, यूनरी फेज डायग्राम आर फेज डायग्राम फॉर सिंगल कंपोनेंट सिस्टम्स। मतलब जो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम होते हैं इसको हम यूनरी फेज डायग्राम बोलते हैं। फॉर वाटर डिस्कस अर्लियर इज एन एग्जांपल ऑफ यूनरी फेज डायग्राम। अनदर एग्जांपल इज अ डायग्राम शोइंग एलोट्रोपी ऑफ आयन or any other element. Okay, here in seen figure, here the phase diagram of water. Here 3 curve line is meet at a one point is known as a
triple point of water. Okay, triple point of water means here three phase, ice, liquid and vapor all are in a equilibrium condition is known as a triple point of water. Okay, all also these three curved line also separate the three different phases, ice, liquid and vapor. Okay, and all the process is a melting, freezing, boiling, condensing and sublimation are represented by a diagram. Okay, now सेकंड बाइनरी फेज डायग्राम. बाइनरी फेज डायग्राम क्या होता है, इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम होती है. फेज डायग्राम विच कंटेन्स द टू कंपोनेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ए बाइनरी फेज डायग्राम. इन दिस फेज डायग्राम, okay, we take on x-axis composition and y-axis we take a temperature. Okay, here the iron carbon phase diagram in a figure. Here on x-axis we take a percentage of carbon and y-axis we take a temperature of a iron. Okay, here iron carbide also known as the Fe3 phase diagram. Here percentage of carbon present and temperature define the phases of iron carbon alloy. Okay, here above the liquidous line alloy, iron carbon alloy in form of a liquid phase. Okay, and below the solidus line means 723 degrees Celsius, iron carbon alloy in a form of a solid phase. Okay, this is a binary phase diagram. Also the binary phase diagram also classified in three categories. First of complete solid solution type, second eutectic type, third is paratectic type. Complete solid solution type means two metals are completely soluble in liquid state but entirely or completely also soluble in solid state is known as a solid solution type. इसमें क्या होता है, जो मेटल लिक्विड में होती है तब भी दोनों soluble होते हैं एक बीजा में, और जब वो फाइनली सॉलिडिफाई होती है तब भी वो soluble होते हैं solid state में. इसको हम बोलते हैं complete solid solution type. Okay, now second type is eutectic type. Eutectic type means two metals are completely soluble in liquid phase but entirely or completely insoluble in a solid state. इसको हम बोलते हैं eutectic type phase diagram. Okay, means दो मेटल लिक्विड फेज में होते हैं तब soluble होते हैं, बट जब वो सॉलिडिफाई होके सॉलिड बनती है तब वो एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं eutectic type phase diagram. Third type is paratectic type, means here liquid phase and solid phase comes in a solid phase, इसको बोलते हैं paratectic type phase diagram. Okay, now discuss one by one. First, complete solid solution type. Okay, before this we discuss the how to draw equilibrium or phase diagram. Okay, now we take binary diagram, two metals, one copper and second nickel, and takes some samples 1 to 11. Here on a one sample we take copper 100% and nickel 0%, means here copper is a pure metal. Okay, now draw its cooling curve. Here 1 indicates a cooling curve of copper. Okay, and L1 point is solidification start point and S1 point is a solidification end point for a sample 1. Same as sample 2, we take copper 90% and nickel 10% and draw its cooling curve. Okay, here L2 is solidification start point and S2 is a solidification end point. Okay, 2 indicates the cooling curve of number of sample 2. Okay, and same as a 3 sample, we take copper 80% and nickel 20% and draw its cooling curve. L3 is indicate the solidification start point, S3 indicates a solidification end point, and here 3 numbers of cooling curves, so is a 80%, 20% alloy. Okay, same as sample 4, 5, 6 up to 10 of different composition and draw its cooling curve. Okay, now 11 number samples, we take copper 0% and nickel 100%, mean here nickel, pure nickel metal. Okay, so its cooling curve in a 11 number of sample. Okay, here L11 is solidification start point and S11 is a solidification end point. Here nickel is a pure, so his cooling curve is a straight line from L11 to S11 point. Okay, now we join the solidification start point
L1, L2, L3, L4 up to L11. Oh, and draw its curve line. It's known as a liquidus line. Same as point from point S1, S2, S3, S4 up to S11. Draw its curve line. It indicates by solidus line. Okay. So here above the liquidus line, alloy in form of a liquid, and below the solidus line, alloy in form of a solid phase. Okay. In between the liquidus and solidus line, alloy in form of a liquid plus solid phase. Okay. This is a binary phase diagram of alloy. Okay. Same as here, the complete solution type is a nickel copper. Okay, it's a same here. Figure displays the alloy of two metals which forms a solid solution at the concentration of two species. This is another type of solid phase diagram. Same as a germanium silicon phase diagram. Same as a binary phase diagram, completely soluble in each other. Now second type is a eutectic phase diagram. Eutectic phase diagram, two metals are completely soluble in liquid but completely or entirely insoluble in solid state. It's known as eutectic. Okay, here TMA is a melting point of metal A, TMB in a figure is a melting point of metal B, and T line it's solidus line. So solidus line means below this line alloy in form of solid. Okay, and above the liquidus line alloy in form of a liquid phase. Okay, in between the TMA to T line alloy in form of a liquid plus solid phase. Okay, same as a right side. TMB from TMB to T line alloy in form of liquid plus solid. Okay, and E point is known as a eutectic point. Eutectic point means here liquid alloy is directly converted into solid phase as a T line and point E. Okay, so E point is known as a eutectic point. Here no intermediate phase of liquid plus solid is present during the reaction, so it is known as a eutectic reaction or eutectic point. Okay, and lastly, same here another example of tin lead phase diagram. Okay, this is a eutectic phase diagram. Okay. Third, paratitic phase diagram. Here paratitic means two alloy that go to in a one solid. Here liquid plus alpha solid goes to a beta solid. Okay, and so in figure here liquid plus alpha, okay, is converted into beta at a point of circle by 1186 degrees Celsius. Okay, liquid plus alpha goes to beta phase. This is known a paratitic reaction and it is known as a phase, the paratitic phase diagram, or it is a reversible reaction. Now some of the application of phase diagrams. First of ओवरऑल कंपोजिशन, हम क्या करते हैं फेज डायग्राम से ओवरऑल कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना कंपोजिशन है ए और कितना कंपोजिशन मेटल बी का. ओके, solid line also we find out, we draw the solidus line and find out the metal phase. Okay, same as a liquid line. Liquid line indicates a metal above this line in liquid phase. Okay, same as a limit ऑफ सॉलिड सॉलिबिलिटी, कितने अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं दोनों मेटल, इसको बोलते हैं हम लिमिट ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी. केमिकल कंपोजिशन ऑफ फेजेस एट एनी टेम्परेचर, हम बाय यूजिंग ऑफ फेज डायग्राम भी फाइंड आउट कर सकते हैं केमिकल कंपोजिशन, कितना परसेंटेज मेटल ए लिक्विड में है और कितना परसेंटेज मेटल बी लिक्विड में है, और कितना परसेंटेज ए सॉलिड में है और कितना परसेंट मेटल बी सॉलिड में है, हम फेज डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अमाउंट ऑफ फेजेस एट एनी टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ फेज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनी टेम्परेचर लाइन पे. ओके, इनवेरिएंट रिएक्शन, कौन से यूटेक्टिक रिएक्शन, पैराटेक्टिक रिएक्शन, टेक्टोइड रिएक्शन हो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ फेज डायग्राम. और लास्टली डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर. थैंक्स. If you like our contents, please like it, share it, and subscribe our YouTube channel. Thank you.